बद्रीनाथ और माना की ट्रिप के बाद आई डिडंट रियली वांट टू रश होम. आई वांटेड टू रिलैक्स एंड चिल फॉर सम टाइम. और ऋषिकेश उसके लिए एकदम परफेक्ट था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू स्टे इन ऋषिकेश फॉर 2 days. इससे पहले तो बस ओवरनाइट स्टे करती थी और आगे निकल जाती थी. ऋषिकेश में मेरा स्टे था द हॉस्टलर मैक्स में, और ये रहा मेरा डॉर्म. काफी क्यूटली डेकोरेटेड था हॉस्टलर मैक्स. एनीवे, मुझे लगी थी बहुत तेज भूख, सो मैं फटाफट फ्रेश हुई और गई रूफटॉप कैफे पे. आई रियली लाइक दिस कैफे. एक तो व्यू बहुत अच्छा, और अगर मौसम भी अच्छा हो तो यू कैन एक्चुअली वर्क हियर, रीड अ बुक, रिलैक्स, चिल, डू व्हाटएवर यू वांट, एंजॉयिंग दैट ब्यूटीफुल व्यू एंड फ्रेश एयर. सो आई डिड सम पेट puja, enjoying that beautiful view. Veg grill sandwich and ginger lemon honey tea. और रात को उसी रूफटॉप कैफे पे इन टिमटिमाती सिटी लाइट्स को देखते हुए लाइव म्यूजिक एंजॉय किया. सुबह हॉस्टल में ही रिलैक्स करके दोपहर में मैं निकल गई घूमने. हॉस्टल जहाँ पे सब लोग घूमने आए थे, ये लोग मेरे को साथ में लेके चल पड़े हैं. हम आए हैं भूतनाथ टेम्पल. सो पहुंच गए हैं भूतनाथ मंदिर. यहाँ से ऊपर जाना है. A little bit of walk and then we'll reach. Yo! भूतनाथ मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने रेस्ट किया था जब उन्होंने सती माता से विवाह करने का प्लान किया था. इस मंदिर में काफी सारे फ्लोर्स थे, शायद 7 या 8. मेन मंदिर टॉप फ्लोर पे है और वहां से व्यू, वेट फॉर इट. फाइनली हम हैं टॉप फ्लोर पे भूतनाथ टेम्पल के, एंड लुक एट द व्यू अराउंड. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. और ये है मेन मंदिर शंकर जी की भूतों की बारात की बहुत सुंदर पेंटिंग के साथ. प्रेजेंटिंग मसलमैन ध्रुविल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक करते हुए. भूतनाथ टेम्पल डन. नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज पटना. वाटरफॉल. लेट्स गो. कुछ दूर चलते ही. और अब बारिश शुरू हो गई है एंड वी हैव टेकन अ हॉल्ट और ओले ही पड़ने लगे हैं. ओले. पहुंच गई हूँ पटना वाटरफॉल के हाइक पर. छोटा सा हाइक है एंड हम पहुंच जाएंगे ऊपर. आई होप द वाटरफॉल इज गुड. आई डोंट नो कैसा दिखता है. It was an easy 15-20 minutes hike and it was very nice and peaceful. Here we are, Patna waterfall. So this is it guys. ये रहा waterfall.
अभी इसमें बहुत मडी पानी है, बहुत गंदा पानी है एंड बहुत कम पानी भी है, बट आई गेस मानसून में ये बहुत अमेजिंग लगता होगा, बहुत ज़्यादा पानी के साथ। एंड दिस इज अ स्मॉल पॉन्ड जिसमें आप डुबकी मार सकते हो, खेल सकते हो, नहा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। लुक एट दैट स्ट्रक्चर, ये पानी के गिरने से बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस बनी है, पॉइंटी सी, नाइस। इट्स अ बिग वन, हाइट बहुत अच्छी है। पटना वाटरफॉल फॉर यू गाइज। द हाइक वाज आल्सो वेरी गुड, बहुत ही घना जंगल है, अ लॉट ऑफ ग्रीनरी एंड इट इज रियली ब्यूटीफुल। वाटरफॉल में पानी होना हो ज़्यादा, चिकन पी के जाएंगे। ओके, सो बिडिंग एडियो टू दिस वाटरफॉल, और अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल। आज का दिन हुआ यही खत्म। सी यू टुमारो। और यहाँ से हम लौट गए अपने हॉस्टल। पर उस रात जो जोर की बारिश हुई, वाओ, लाइव म्यूजिक भी बंद करना पड़ गया, बट इट वाज अमेजिंग। Next morning I went for some shopping and ये sound healing bowl इतना amazing था that I got one for myself. This is amazing! The sound and the vibrations. Wow! Oh my god, the vibrations! Whoa! So I'm out shopping with these girls and I'm having so much fun. And the afternoon was full of games and epic fun. Let me show you something. आलसियों वाली टीटी। So, अब जा रहे हैं हम त्रिवेणी घाट और वहाँ पे देखेंगे हम गंगा आरती। So yeah, it's very hot in ऋषिकेश। थोड़ी बारिश तो हुई थी but still it's very hot. So we have reached त्रिवेणी घाट और अब जल्दी जल्दी भाग के we'll just go get the spot for the aarti. ऋषिकेश में मैं पहली बार गंगा आरती देख रही थी एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। त्रिवेणी यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे फेमस घाट है। क्यों? क्योंकि त्रिवेणी जो शब्द है वो बना है त्रि और वेणी मिलाकर। त्रि यानी कि 3, वेणी यानी संगम। किसका संगम? गंगा, यमुना, सरस्वती। इसीलिए इट्स अ मस्ट विजिट घाट। संध्या काल हो रहा था और अब आरती शुरू होने वाली थी। पहले भस्म आरती, फिर मेन आरती। चलिए देखते हैं। एक ही बार जो तेरी शरणा गतिया था।
जल निर्मल आता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, गंगा गंगे नमः। अटल बद्रीनाथ नारायण कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। जय गंगा मैया। आरती खत्म होने के बाद मैं गई आरती लेने और गंगा मैया को प्रणाम करने। घाट का माहौल जो था वो बहुत अमेजिंग था। जितना स्पिरिचुअल था उतना ही एनर्जेटिक भी। इनफैक्ट जिस समय मैं नदी के पानी में खड़ी थी उसी समय पीछे लोग भजन गा के डांस कर रहे थे। आई मिस्ड इट बट आई वाज एबल टू कैच अ लिटिल बिट ऑफ इट। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। लीजिए लीजिए। बस फिर घाट पे थोड़ी देर चिल किया और लौट गए अपने हॉस्टल। सो गाइस, इस बार के ऋषिकेश के सफर में बस इतना ही था। नेक्स्ट टाइम और एक्सप्लोर किया जाएगा। बट फिर भी आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड कमेंट्स में टेल मी योर फेवरेट स्पॉट इन ऋषिकेश। I'd really love to know. See you next time. Bye bye. और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।